DRR-elect Swapnil, DRR nominee Vassal, all Rotators and all Rotarian President Secretary. You all are welcome for today's session. Thanks. कल कमलजा आपने जो बात बोला था और जो सजेशन दिया था वो हिसाब से आज सभी साउथ और महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट रोटरी के और रोटरी के प्रेसिडेंट है आज, और सब DRR भी है आज। तो आपको जो चाहिए था वो आज लाके आपको दिया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सजेशन। हमने ये सोचा था सर कि हम रोटरेक ब्रिज बनाने के पहले रोटेरियन को समझाएंगे व्हाई रोटेटर आर नीड फॉर रोटरी। वो पहले हमारा मकसद था कि हम रोटेरियन को समझाएं कि रोटरी क्यों गई। दूसरा, अभी हम प्लान कर रहे हैं कि एक रोटरी के जो लीडर्स है वो पूरी रोटेटर की टीम के साथ 2 या 3 दिन में मीटिंग करेंगे। पूरा चिंतन का बोर्ड और स्वप्निल का बोर्ड और सिलेक्टेड रोटेरियन रोटेक्टर, तो पूरा रोटेक के साथ रोटेट डिस्ट्रिक्ट 3060 का मीटिंग 2-4 दिन में हम करेंगे। ये जो आपने सजेशन दिया वो हिसाब से। और कल विरल गोंडलिया को जो आपने टारगेट दिया था, तो रात को उसके साथ डिस्कशन करके हमने फाइनल किया कि चिंतन का जॉब ये है, सॉरी विरल का, कि उसको रोटेट में से रोटेरियन बनाना है और उसका टारगेट है 200 रोटेटर को वो रोटेरियन बनेगा इस साल में, और उसका प्रोसेस उसने स्टार्ट कर दिया है। पूरा 5 रोटेटर का भी वो डेटा बना रहा है। थैंक यू फॉर योर काइंड सजेशन। वी होप कि आपने जो सजेशन दिया है उसके ऊपर हम काम करेंगे तो हम कुछ अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। या रुचिर प्लीज। रुचिर। Yeah. So, friends, good morning to all the presidents, the secretaries of Rotary and Rotary clubs of South Gujarat and Maharashtra, assistant governors, and a very special warm welcome to our own Rotary International Director, Kamal Bhai Sanghvi. Friends, in this series of training, we are continuing, and today is the topic of opportunities of youth in Rotary. So let us understand from Kamal Bhai how we can involve youth and what are the opportunities for youth. And we had the session yesterday with the Central and the Saurashtra, and as Governor-elect Prashant Bhai has already told that he had suggested to involve all the road tractors. So here I welcome especially the road tractors, all the DRRs, past, present, and future. And Kamal Bhai, I also would like to add to that actually we had planned the pets in the first weekend of April at Silvassa, and we had one session that was common to all the road tractors and the Rotarians. So that way it was already planned. But yes, your suggestion boosted us to immediately get into action. And thank you so much for that. And we look forward for your guidance to all of us, the Rotarians and the road tractors, to go ahead hand in hand and for the best service to the community. And by these opening remarks, I hand it over to Rotary International Director Kamal Sanghvi. Okay, thank you, Ruchir, and good morning to Prashant and all the senior leaders of the district who are here. Jo aap subah aaye hain, thank you so much, and thank you for having me here. And thank you to all the road tractors, the DRRs and the road track presidents, and any other road track district officers which you are here. Yes, I have suggested, क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है। हम अक्सर कहते हैं कि हमको रोड ट्रैक्टर्स को मेन स्ट्रीम में लाना है, और ये I feel that we should be open with them. Let's discuss everything out with them.
क्या फर्क पड़ता है, लेट्स हैव द व्यू पॉइंट। ये बहुत जरूरी होता है। कल मैंने बहुत कुछ कहा था कि इन लोगों की व्यू पॉइंट लेना बहुत जरूरी है। If we want to mainstream Rotract into our organization, it is important that we discuss issues together, threadbare on one platform. It makes things easier. So yes, I know strategy, Prashant, you had that. First tell the Rotractors, Rotarians what they expect out of Rotractors and what are the opportunities for them, and then go back to Rotractors and then tell them. I think then there is the missing of a link somewhere. कहीं पे कहीं एक कड़ी छूट जाती है। उसलिए मैं ये चाहता हूं कि भाई साथ में बात करो। इट इज वेरी इजी टू डू दैट। थोड़ी उनकी भी बात सुने, थोड़ी हमारी भी बात कहें, एंड देन वी कम टू अ कॉमन कंक्लूजन एज टू व्हाट वी वांट टू डू। I think that was the ethos why we have Rotractors in International Assembly now. That is the ethos. Mark and Holger didn't say कि भाई पहले हम आपको समझाएंगे इंटरनेशनल असेंबली में और फिर रोट्रैक्टर्स को अलग से समझाएंगे। बोला नहीं, आप वहीं रहो, जब हम समझा रहे हैं आप भी वहीं रहें, क्योंकि आपका भी व्यू पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। Having said that, let me just welcome all of you. आप लोग आए, तमें बधाई। Can I speak a bit in Gujarati here also? Yeah. Yes. Part of Marathi also here. हिंदी भी चलेगा। हिंदी भी and चलेगी, English थोड़ी will be गुजराती good. भी Yeah. चलेगी, थोड़ी इंग्लिश भी चलेगी, right? Yeah. All And right. Marathi So also is welcome. this is the level, this is the wonderfulness of Rotary organization. सब कुछ चलता है यहाँ पे, ठीक है? So let me, having said that, first let me congratulate आप सब Rotary leaders, Rotractors, all that you are doing some fantastic. हम बहुत ही अजीब और गरीब वक्त से गुजर रहे हैं। ऐसे वक्त न कभी हमने पहले देखा है और भगवान न करे हम देखें ऐसा। लेकिन बहुत कुछ लोग चाहते भी हैं कि ऐसा वक्त वापस आए, क्योंकि डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में, महामारी में नहीं आए, लेकिन ऐसा वक्त आए कि हम अपने प्रियजनों के साथ 10-15 दिन एक रूम में रह सके, प्यार मोहब्बत की बातें कर सके, छोटी सी रमी खेल सके, छोटा सा मोनोपोली खेल सके, and we enjoy the fellowship of all our loved ones and all our friends in a small house, in a small building. I know everyone, a lot of you are enjoying yourself and enjoying the fruits of this fantastic get together. Yeah, yes, but COVID में हम बहुत ही महामारी में, दुनिया में बहुत ही दुख है. There is a lot of pain everywhere in the world. બધી જગ્યાએ બહુ જ pain છે. ઘણા જણોએ પોતાના loved ones ને ખોયા છે. A lot of them have lost. A lot of them अलग-अलग जगह છે. Some of them are away from their family because they are stuck up in their place of work. So let us all be very kind to them. And I thank each one of you for being so kind, being so innovative. તમે બધા એક innovative method માં you are helping people on the street. People who need food, people who need clothes, people who need other things, people who need help, medical help. So all of you are doing that, and I thank each one of you. तहे दिल से आप सबका शुक्रिया करता हूँ कि आप सब Rotarian have woken to the call that we need to lend a hand and make people's lives more better. And thank you for doing that. Having said that, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी कार्य करें, कोविड के लिए जो भी कार्य करें, सुरक्षित होके करें. Do it with your district administration. Do it in conjunction. Take advice from your district administration before you do it. क्योंकि the principal job of a Rotarian is to keep himself safe. पहले अपने आप को सुरक्षित करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें, and then go and help a helping hand. There are various methods of helping hand. Invariably, जब having said that, लोग कहेंगे कि सर तो फिर help ही नहीं करे क्या? नहीं, you need to help, but सुरक्षित रख के. Because अगर आप सुरक्षित नहीं हैं, तो दूसरे भी सुरक्षित नहीं. आपकी वजह से कोई और सुरक्षित नहीं हो, that is not good. So you need to look after yourself, social distance yourself, so that you don't spread it further to somebody else. So that is most important. And so I would want each one of you कि एहतियात बरतिए, so that you don't get into trouble. Because of you, someone else does not get into trouble. And at the same time, you help people. And I thank you all for coming forward with the clarion call of helping the Prime Minister's Care Fund, the call of this Rotary senior leaders. We have decided to give 25 crores to that because the government and the Prime Minister of India is doing a fantastic job, amazing job. बहुत बढ़िया job करते हैं. अगर दुनिया के सामने आप तोले अपने आप को,
So we are 100 crores and we have only 10,000 cases, where there are people are even 1/10 of our size have got more than 1 lakh cases. So you can imagine the tremendous work which government is doing. और हम बहुत सराहते हैं कि चाइना ने एक दिन में 1000 लोगों की हॉस्पिटल कर दी। सर, हमारे देश में एक दिन में हमारे प्रधानमंत्री ने 7000 हॉस्पिटल बेड्स क्रिएट कर दिए थे, 7000, और वो तो बाकी हॉस्पिटल तो हम गिनते ही नहीं है। These are the new railway created 7000 isolation beds in 1 day's time, and we have got nearly about 50 hospitals across India only looking after COVID patients. Only. That's the level which the government is working. So let us all commend the government. और अक्सर छोटी छोटी बातें होते हैं, जैसे बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी गलतियां होती रहती। डू नॉट गिव, उसको ज्यादा वो मत दीजिए। छोटी छोटी गलतियां होती रहेगी। इतने बड़े शहर में छोटी छोटी चीजें कुछ रह जाती है। Don't get too bogged down by that. That should be okay. Don't worry. I am sure they will look into it. Government will look into it. However, having said that, let me all wish each one of you a good morning. And I know many of you are stressed कि ये कब खत्म होगा, कब हम बाहर निकलेंगे। तो शाख रही तो फूल भी आएंगे, शाख रही तो फूल भी आएंगे, पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे, यानी अच्छे दिन के लिए हमें दिया जलाना पड़ेगा। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ पंक्तियां की थी जो मैं दोहराना चाहूंगा। ये हर रोटेरियन को करने की जरूरत है कि आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा है। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा है। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए। Friends, it is very easy to curse the darkness, but every Rotarian should light a lamp. We need to do, हमें अपने हक का दिया जलाना होगा। You need to do the diya jalaing, then only the world will become bright, shining, and the way we want it. तभी रोशनी आएगी हमारे गलियों में, हमारे घरों में, हमारे कॉम्प्लेक्स में, हमारे देश में, हमारे शहरों में। So I want each one of you to burn that light to take this COVID away. So please do your bit in whatever you're doing. Okay? So having said that, let me just start with the topic today. Opportunities for youth in Rotary. कल मैंने जब शुरू किया था तो मैंने पूछे थे कितने यंग लोग हैं यहाँ पे। But today, Prashant, let me commend you that within 24 hours, you've got half of the people here are below the age of 40 or 35. So I am glad that they are all here. And now let us discuss. मतलब क्या है? I will discuss broadly in 3 parts. यहाँ Rotractors भी हैं, DRRs भी हैं, senior Rotarians भी हैं. What programs of youth are there for Rotary? What programs of youth are there in Rotary? Sorry. Rotary में youth के लिए क्या opportunities? We'll discuss that one shortly for 10 minutes. What is deterring the youth to join Rotary? क्यों youth Rotary को join नहीं करते? उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। और तीसरा point, how can we engage youth in Rotary family? हम youth को कैसे engage कर सकते हैं? ज्यादा कैसे? Program क्या है? Youth क्यों नहीं join करते हैं? और youth को engage कैसे करें हम Rotary activities में? तो हम ये 3 चीज पे 3 भागों पे बात करेंगे। उसलिए पहले मैं ये भी कहना चाहूंगा, जब भी कोई चीज जब भी बात करें, हम अक्सर रोटेरियंस हम अक्सर ऊंची आवाज ऊंची रखते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आवाज ऊंची रखोगे तो कुछ लोग सुनेंगे, आवाज ऊंची रखोगे तो कुछ लोग सुनेंगे। बात ऊंची रखोगे, बात में दम होनी चाहिए। बात ऊंची रखोगे, ये बहुत सारे रोट्रैक्टर्स आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि these are the future of our country, they are the future of our nation, they are the future of our organization. इनके ही हाथ में हमारी बागडोर है। So ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा कैपिटल है। All the rotractors which you are here
I always believe, who are the Rotaractors? Rotarian in action are the people who are called Rotaractors. आप सब हमारे फ्यूचर हो, और रोटेरियन जो फ्यूचर होता है उस इन्वेस्टमेंट पे हमें खुद ध्यान देना होता है, हमारी अपनी सुरक्षा के लिए, हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए. एंड Rotaractors, you also understand that you are the leaders of this organization for next 10 years. After 10 years, you are going to lead this organization. So it is very important that not only you learn from the Rotarians, you also bring your ideas and your color and your hues and your thought process into the organization. दोनों को एक कड़ी बनके बनना जरूरी है. You have to have that link, both of you. Both of us have to sit together for the betterment of our organization. क्योंकि मैं ये मानता हूं कि रोटरी से बढ़िया कोई ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में है ही नहीं. Why? So let me first start by कि रोटरी के यूथ प्रोग्राम्स क्या है. अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारे यूथ के लिए क्या है यहाँ पे. तो let me just start by first saying, look at it the wonderful way. What are the programs which are there? So Rotary has, मतलब एक फ्लावर बुके की तरह है. हर किस्म के फ्लावर्स है, हर किस्म के प्रोग्राम्स है लोगों यूथ के लिए. For the youth between 15 and 18, what are the programs? Can anybody tell me? For programs for between youth for 15 and 18 के लिए क्या programs हैं? Just one of you just unmute and tell me. Interact. Interact. Anybody else? Any can other do- program? we can 15 do- से 18 बरस के लिए. We can do Raila for them. Fantastic. Raila और Youth exchange. Youth exchange. Youth exchange को कौन बोला? Who said? What was the lady who said youth exchange first? Rotarian Sheetal Taylor from Rotary Vapi Riverside. Okay, Sheetal Ben, thank you very much. Sheetal, thank you. This is the congratulations and let's give big hand to Sheetal. Amazing, yes. दुनिया का, मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे अच्छा प्रोग्राम है यूथ एक्सचेंज. यूथ एक्सचेंज इज द अपॉर्चुनिटी फॉर सेंडिंग समवन. मैं अपनी एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगा कि मेरा बेटा है 21 साल का है. इज टुडे वर्किंग फॉर स्विस बैंक. उसको मैंने यूथ एक्सचेंज स्टूडेंट बनाया है. सेंड हिम टू साउथ अमेरिका. When he was in school, I sent him to South America. 16 साल का था या 15 साल का था, मैंने उसे यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में sent him to South America. मैंने एक बच्चे को भेजा था and he went for a 6-month program. 6 महीना के बाद when he came back, I got a man back in my house. That is youth exchange. It changed his personality, it changed his thought process, it changed the way he looked at the world, because जब आप दूसरे देश में जाते हो तो you become knowledgeable not only, and you become sensitive to other people's thought process and need in the world. दूसरे लोग कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं. मेरे यहाँ एक नेदरलैंड का बच्चा आया था यूथ एक्सचेंज में मेरे घर पे रहने के लिए. वो सोच ही नहीं सकता था. उसने जब मेरे घर में आया, झारखंड में आया, उस समय हम लोग बिहार में के पार्ट थे. We never used to have electricity for more than 18 hours a day. 18 घंटा हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती. सुबह पानी नहीं आता था. ये मैं 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ. नहीं आता. And when that kid came, उसे ये समझ में ही नहीं आया कि भाई how is it that कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है घर में. How is that कि पानी नहीं है. क्योंकि उसके देश में गरीबी की परिभाषा ये थी कि जब कोई पिताजी एक बच्चे की मास्टर्स प्रोग्राम, if he is doing his master's program in a private college, and when his father cannot pay the fees, that is a गरीबी की निशान होती है नेदरलैंड. But if he does in a government college in Netherlands, it's free of cost. But किसी अच्छी private like Harvard, Massachusetts, something like that, अगर MIT, उसकी फी अगर मेरे पिताजी नहीं भर पाते हैं तो मेरे देश में उसको गरीब बोलते हैं. उसको ये समझ में ही नहीं आया. And when he stayed with me for 1 year, and when he went back, he was a changed person. His parents called me up and he says, "What have you done to my son?" Everything he does in this world, now he looks at what it is going to impact the other poor people in the world. He became so sensitive to the other people's thought process, दूसरों की जरूरत के लिए, क्योंकि पहले वो अपने आप में सीमित था.
अब वो असीमित हो गया. He became असीमित because he started thinking कि मेरी आचरण, मेरी सोच, मेरी वे ऑफ लिविंग से दूसरों को कितना तकलीफ होती है या दूसरे को कितना फायदा होता है. So every year he has now started donating even nearly 20% of his salary. Even today he sends it to for charitable causes to different organizations because he is sensitive. और कार्ल विल्हेम स्टेनहैमर ने कहा है, ये पास्ट प्रेसिडेंट है रोटरी इंटरनेशनल ने, उन्होंने कहा है कि अगर हर बच्चा, everyone who can will participate in a youth exchange program, if every child in this world अगर ये youth exchange program में एक बार शामिल हो जाए, so let me tell you, there would be no wars in the world. That is the level of this program. That is the level. So it is on us. If we are talking about peace in the world, we are talking about peace scholars in the world. But you know which is the biggest program which promotes peace in the world, according to me, is the youth exchange program. आप जितने बच्चे को भेजेंगे youth exchange में, उतनी ही peace दुनिया में आएगी. So also Rotractors, if you get an opportunity to take a youth exchange, if you are following in that age bracket as yet, if you are still a Rotractor below age of 18, or if you have a brother who is an interactor, if you have a sister who is smaller than you, send them. Ask Rotarians to send them as a youth exchange student. I would want each one of you to send your children as youth exchange students. So this is the first opportunity which youth get in Rotary. Let's talk about the next opportunity. 14 से 30 साल के बच्चों के लिए एक youth का एक बहुत ही बड़ा program है. Someone spoke about it, Raila. Raila is the biggest and the most absolutely astonishing and beautiful program. ये रोटरी का एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है जहां आप लीडरशिप अपॉर्चुनिटी देते हो और सिखाते हो लोगों को लीडर बनने की. You train them for that. And Rotractors, I would want each one of you to participate in a Raila. If you want to understand the ethos of Rotary, do to participate in a Raila. Many of you have. Many of you may not have participated. So I want to raise hand. Let me see how many of the Rotractors have participated in a Raila. Can you just quickly raise your hand? Quickly raise your hand, Rotractors, for all those who have participated in Raila. Okay, many of you have done that. Let me tell you, thank you. I think ये दुनिया का सबसे बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है जहां हम एक बच्चे को, मेरे क्लब में we do a Raila of different types. मेरे क्लब में एक Raila होता है for the girls from tribal village schools. हम ट्राइबल बच्चे को ट्राइबल स्कूल से लड़कियों को ले Raila सिखाते में पार्टिसिपेट कराते हैं for 2 days. It's an overnight 2 days program for tribal girls. When they come into this Raila, they feel astonished क्योंकि उसने जिंदगी में उसको ऐसी opportunity मिली ही नहीं. They have never been in a campfire. They have never been told to do dramatics. They have never been told to have speaking opportunity. उनको ये कभी मिला ही नहीं है और वो हम अच्छी जगह में करते हैं. उनकी स्कूलें तो dilapidated होती है, वो गवर्नमेंट स्कूल्स की बेचारी पढ़ती हैं. They have never seen schools beyond 3 rooms and 4 rooms. And suddenly we bring them into a large private school and do the Raila there. सोच बदल जाती है बच्चों की. When you finish the Raila, the man or the woman or the girl and the boy change the personality क्योंकि वो अपने आप को लीडर समझने लगते हैं. They also understand कि हाँ हम भी लीडर बन सकते हैं इस देश के. And we can also become leaders and bring change into this world and have the opportunity to do that. So Raila is something which I want each one of you, each club. हमारे हिसाब से प्रशांत, हमारे हिसाब से I told you that, right? There are 2 programs. This is one program. I feel every club is obliged to do a Raila. अगर हर क्लब में facility नहीं है, I can understand some clubs do not have the facility. Then join up with another club. Join up with between at least 3 or 4 clubs do one Raila. ये कंपलसरी कर देना चाहिए या आपके डिस्ट्रिक्ट में जोन्स रखे हैं आपने, राइट? Right, sir. प्रशांत? Yes, sir. Let one zone host one Raila. Okay. Let it make it compulsory for an assistant governor.
tell each of the assistant governor your scope of work between all your clubs together. You should hold one Raila, a zonal Raila. Okay, fantastic. Okay? Sure. It is very much required. Rotarians, अगर बच्चे को खुशनुमा बनना है, बच्चे को आगे लाना है, तो रायला करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चे की सोच बदल जाती है, बच्चे की पहुंच बदल जाती है, बच्चे की थॉट प्रोसेस बच्चे की आदतें बदलती है, बच्चे को एक लीडर बनने की अपॉर्चुनिटी मिलती है. So that is one big thing. Let's come to the next one. 12 से 18 साल के बच्चे. Someone said interact. ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है हमारे रोटरी का, जहां हम, you know what, which is the biggest, this is the best age where you can inculcate a good habit into a child. You can inculcate the habit of giving, you can inculcate a habit of thought process. ये molding साल है, ये उस जमाने की बात है जहां लोग सिर्फ मोल्ड होते हैं, थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, दुनिया को देखने की नजर डाल रहे हैं. An interact program is something I would want all Rotaractors here, nurture an interact club. You should be going back to every interact club. Now I'm giving you an opportunity to participate. अक्सर Rotaract कहते हैं कि हमें participation का मौका ही नहीं मिलता. This is the participation. I would want Rotaract to start finding out schools and open an interact in that same school or another school. जिस स्कूल में आप हो, जिस में आप चला रहे हो एक Rotaract club, open an interact club. Like we want you to come in, you should want younger people of your school to become interactors. It is a process. Like we want you to join us, you should want interactors to join Rotaract. So unless you create an interact club, you cannot have them join you. Interact is one of the most beautiful, क्योंकि हम कहते हैं ना, नन्ही कली को हम पानी बो रहे हैं. We are giving खाद and पानी to a small seed. This is the time when they grow. This is the time when they make. मैं जानता हूँ, और ये मैं इसलिए कहता हूँ, एक छोटी सी कहानी और एक शेयर करता हूँ. जब मैं छोटा था, स्कूल में था, I was about 10 years or 12 years old, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था. छुट्टियों में घर आता था तो मैं अपने दादाजी के साथ लंच लेता था. It was a rule in my family that lunch मैं दादाजी के साथ करूंगा और डिनर अपने पिताजी के साथ. और दादाजी जैसे खाने पे बैठते थे, और अगर हम पहले खाना खाते थे, हम जैन हैं, उसलिए पहले he would do a namo karam, namo aryantaram on the table, and then he will say, let us start eating the food. આમાં ઘણા જૈન હસો તમે લોકો ગુજરાતી જૈન, તો આ વિધિ હતી અમારા ઘરમાં. And એના પેલા ખાવા પેલા he would tell me, बेटा ये 2 रोटी लो and go and share it with a beggar, or go and share it with someone who is less fortunate than us. And I would go down from my house and find somebody who needed 2 rotis. I feed him. I used to give it to him. 2 रोटी का मोल सिर्फ 2 रुपया था. कोई इससे ना गरीब बन सकता है, ना कोई अमीर बनता है. और I was not doing too much of a दान. 2 रुपया सिर्फ देता था किसी, और 2 रोटी से भूख भी नहीं मिटती थी किसी. बट ये रिचुअल था मेरे घर में. ये रिचुअल क्यों था? Because दादाजी was not trying to become magnanimous. एक बड़े दानी नहीं बनना चाहते थे, न ही वो किसी की भूख मिटाना चाहते. वो ये चाहते थे कि मेरे में देने की आदत बन जाए, so that I become compassionate, I become relevant in my society. मैं दूसरों को दुख की महसूस करूं कि मैं कितना सुखी हूं और दुनिया में कितने लोग हैं जो दुखी हैं, ताकि मैं I become compassionate in my life. And ये आदत मेरे में डालने के लिए वो रोज ये करते थे. And let me tell you friends, interact is also an आदत. अगर आप रोटरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इंटरैक्टर्स इज एन आदत. उनमें रोटरी की आदत डालें, रोटरी का एथॉस डाले, रोटरी की सोच एक इंटरैक्ट में डाले, क्योंकि उस समय दे आर डेवलपिंग अ सेंस ऑफ थॉटफुलनेस ऑफ देयर ओन. इसलिए जब छोटा होता है बच्चा तो उसे सिखाया जाता है, उसमें आदतें डाली जाती हैं. आप इंटरैक्ट इज सच अ प्रोग्राम जहां आप यू आर पुटिंग एन आदत इनटू अ स्मॉल किड. They will do their small programs. Yesterday there was one doctor, Prashant, who was that lady doctor who said that? Uma Ben. Someone said that. Dr. Uma Patel. Uma Patel, and there was one more person who said her daughter used to do a project. Rizwan Adatia.
Rizwan, yes, Rizwan ji थी. She shared a wonderful story yesterday. बोलते थे हमारे क्लब, मेरी बेटी एक इंटरैक्टर, वो स्कूल से आती है, भूखी प्यासी आती है, पूरे दिन स्कूल में रह गया, अभी तो घर में घुसी नहीं है, बैग छोड़ के सीधा भागती है to collect money for the interact program or project. They were doing some project. तो खाना भी नहीं खाएगी, कपड़े भी चेंज नहीं करेगी, but she was so excited. वो पहले बैग छोड़ के इंटरैक्ट प्रोग्राम के लिए पैसा इकट्ठा करने जाती थी, प्रोग्राम को अटेंड करने जाती और फिर घर में आके फिर she used to do the rest of the rituals. That is the excitement a child has when he or she is in interact. That is the other, that tatparness, that absolutely anxiousness, that willingness to do something good for the society, however small it may be. That is the adat we want to bring, and that is being provided by the interactors. So please, no Rotractor and no Rotract club should be happy if they don't have an interact club under them. अगर Rotractors को आगे बढ़ना है तो पहले अपनी शाख को ठीक करें. अगर शाख ठीक रहेगी तो फूल भी आएंगे, पत्ते भी आएंगे. So the Rotractors की शाख है interactors. Okay. And then you grow into a fruit, which is the Rotary. Okay. So this is a beautiful program. Now let's go forward to the next one. Why the purpose I have you here. The next program, 18 to 30 years of age, the leaders of tomorrow. देश आपके हाथ में है. जो आज आप कर जाओगे वही देश वहीं जाएगा. जो direction you adopt is the direction the country is going to take, our organization to take, and this is the beautiful program of Rotract. और आज sir, Rotractors, we are doing lots for you. We want, now it's no more a program. बहुत साल till last year Rotract was a program. Now you are not a program. You are part of Rotary International. You are members of Rotary International. We give you the opportunity to become members of Rotary International. But अक्सर लोग कहते हैं कि सर रोटरी में सब बूढ़े हैं, थोड़ी हमें भी एनर्जी चाहिए. तो सर ऐसा है, ये बहुत जरूरी होता है कि हर उंगली में 5, हर हाथ में 5 उंगलियां होती हैं. हर का अपना काम है. इसलिए एक क्लब को रेजुविनेट करने के लिए, क्लब, every club needs its all 5 fingers. You are one of the fingers. You have a 60-year-old member, you have a 40-year-old member, you have a 30-year-old member, you have a 20-year-old member, and that is why you need to be in Rotary. Don't get deterred by the fact that some of the clubs have too many elders. No, you need to be there. आप अपने घरों में रहते हैं ना, I'm telling this to all the Rotractors. अपने घरों में रहते हो कि नहीं रहते हो? अपने माता पिताजी के साथ रहते हो कि नहीं रहते हो? कि घर छोड़ के चले जाते हो because वो old है? No, the similar is the Rotary Club. Enjoy the house. Enjoy the goodness of your father and mother. Enjoy the senior Rotarians. At the same time, हम में energy लाओ. It is your job, you Rotractors. आप में ये job है कि आप नए colors लाए, नए hue लाए, नए सोच लाए. अपने घरों में लाते हो कि नहीं लाते हो? हाँ, ये बात सही है कि फुटबॉल भी खेलना है, क्रिकेट भी खेलना है और चौराहे पे जाके, गली के नुक्कड़ में जाके शैतानियां भी करनी है. तो कंटिन्यू स्टेइंग इन Rotract. We are giving you the 2 opportunities. प्रशांत, 2 opportunities अब हो गई. हमारे साथ भी घूमो, फिरो, सीखो और continue to stay in Rotract. We are allowing you to do that. कि ठीक है भाई, अपने वालों के साथ भी घूमो. यही नहीं, एक दूसरा opportunity भी दे रहे हैं. अगर आपको फिर भी लगता है कि हम आपको स्टिफल कर रहे हैं, हम आपके रास्ते में बाधा बन रहे हैं, अपना रोटरी क्लब खोल दो. Now so it is so easy कि पूरा Rotract club can become a Rotary club. You can become and do things Rotarians do the way you want to do it. Rotary की पूरी ताकत आपको दी जा रही है ताकि आप वो चीज, ताकत को यूज करके you bring it to the mainstream and you do things which you think is correct. Go ahead and do it. We are not stopping you to do that. We are telling you, go convert the whole Rotract club into a Rotary club and then do the projects of Rotary. Use the strength of Rotary to execute what you think is correct.
to execute, to streamline, nurture and relish your energy to bring that energy into Rotary. So अब opportunities तीन है. You can be a Rotractor, you can be a Rotractor and a Rotarian. You can convert yourself into a Rotarian without a sponsor club. The whole Rotrac club can become a Rotary club. You don't need a sponsor club. That is the level. लोग कहते हैं ना हमें तो आप opportunity नहीं देते हो. आज मैं आपको opportunity दे रहा हूँ और मैं आपको इसके साथ each Rotractor challenge भी कर रहा हूँ. Each of you presidents, each of you DRRs, I challenge you. And DRRs, it's also your job to create leadership opportunities in other Rotractors, and it is your job that before you lay down your year as a DRR, you should have transition of at least 100 Rotractors, 200 Rotractors in your district to become Rotarians. At least convert 5 Rotrac clubs into Rotary clubs before you lay down your office. क्योंकि ये transition है, it's a simple process. 5 Interact clubs will become Rotrac clubs, 5 Rotrac clubs will become Rotary clubs. 100 Interactors will become Rotractors and 100, 200 Rotractors will become Rotarians. तो आपकी भी शक्ति कम नहीं होगी. अरे वहां खाली करोगे तो Interactors घुसेंगे ना. Space तो आपको भी बनानी होगी. Rotractors, you also need to make a space so that Interact comes in, and आप space कैसे बनाओगे? By shifting to Rotary. This is a natural transition process. पहले लोग स्कूल जाते हैं, उसके बाद कॉलेज जाते हैं, उसके बाद बिजनेस में आते हैं. School is Interact, college is Rotrac, business is Rotary. Now do you understand that equation? And Rotarians, ये सब आपको भी समझाया जा रहा हूँ. This is what is the opportunity you need to give to the youth. And invariably, sir, which is the biggest reason why youth don't come? Why they don't come into Rotary? क्योंकि हम opportunity नहीं देते. Let me tell you, in Rotarians, आप बड़े भाई हो. Hand held आपको करना होता है. जब आपके छोटे बच्चे थे, when you had children who were going to school, 10 साल के बच्चे को आप जब बाहर जाते थे मेला में तो उंगली पकड़ के ले जाते थे, right? Yes or no? All the Rotarians, जब बच्चे छोटे हैं तो आप उंगली पकड़ते हो. जब वो कॉलेज में जाते हो तो उंगली नहीं पकड़ते हो, खाली नसीहत देते हो, लेकिन उनको बोलते जाओ बेटा अपना काम करो. But you still give them नसीहत. जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और धंधे में आते हैं और जब उनकी शू साइज हमारी शू साइज के बराबर हो जाती है तो बेटे के बोलते गो बेटा टेक रिस्क, डज नॉट मैटर, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा. डोंट वी से दैट? आपके पीछे खड़ा हूं. दिस इज एग्जैक्टली द नर्चरिंग. आई वुड वांट Rotractors to be given more opportunities in district projects. Prashant, in your conference, all the Rotractors should be given key positions. Sure. And let me tell you, Prashant, your conference will be the best conference in the world. Let me tell you that. I can assure you that. Okay. Sure, yeah. Do that. Give them positions. Bring them into committees, district committees. Give them. Have this Rotrac representative in most of your committees. If you have a committee on membership, put a Rotrac representative. जैसे आप Rotrac representative रखोगे, तो उसका onus बन जाता है to bring Rotractors into Rotary. You don't have to do the work; they will do the work. In your membership committee, the DRR should be a member. Right. Moment you put the DRR as the member in your membership committee of Rotary, उसका काम ही बन जाता है. उसके पास option ही नहीं बचेंगे. That's his job. That's his job. So I would want, bring them into, amalgamate, make your hands strong, mutti banaye, and that is why. And let me share some stories with you. Choti si statistics, not stories. There are only 5% of new generation in Rotary. पूरे Rotary की membership में only 5% are new generation. ये क्या विडंबना है? Only 5%. If you want to grow, you have to have more. You know what? What is the level? Only 10% of the Rotarians in the world are below 40. सिर्फ 10%. अगर हमारे देश, you know, there is a story. Dinosaurs होते थे. दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी था डायनासोर. वो सोचते थे कि हमारे बिना तो सृष्टि चल ही नहीं सकती. हम तो सबसे मजबूत है, स्ट्रांग है. So they didn't change.
वो बोले हमें चेंज होने की जरूरत ही नहीं, हम तो सबसे शक्तिशाली है। और आज आपको एक भी डायनासोर पूरी दुनिया में नहीं दिखता बिकॉज दे पेरिश्ड। उन्होंने चेंज होने से मना कर दिया एंड दे डिडंट चेंज। दे डिडंट बॉदर कि छोटी उंगली उनके लिए कोई मान्यता नहीं थी, बट ये भूल गए डायनासोर कि मुट्ठी बनाने के लिए 5 उंगली चाहिए, खाली डायनासोर नहीं रह सकता। एंड दे पेरिश्ड। This is exactly what it is, and Rotary is no exception to this rule. Rotarians, agar aap do not change and if you do not bring in younger members into your community, into your club, into your organization, we will perish. Let me tell you that. We are no exception to the rule. Change is the only constant in the world. Those who change will survive. Those who don't change will become irrelevant in the world. इसलिए चेंज लाना बहुत जरूरी है यंगर मेंबर्स को। और मैं ये भी कहता हूँ, बहुत बार अक्सर मैं सुनता हूँ कि भाई हमारा क्लब बहुत बढ़िया है, 20 मेंबर का क्लब है, 20 कपल है, वी रियली एंजॉय, वी डोंट वांट आउटसाइडर्स। डोंट ब्रिंग आउटसाइडर्स। ओके, आई एम अग्रीएबल टू दैट आल्सो। अगर आप अपने क्लब में यंगर्स को नहीं लाना चाहते हैं, दूसरों को नहीं लाना चाहते, अपनी मेंबरशिप नहीं बढ़ाना चाहते हैं, आई एम ओके विद इट। बट क्या आपको रोक मैं what is stopping you from forming a new Rotary club with all younger members? Opportunity de raha hu. Let me ask you one question. How many of you have children above 28 years of age? यहाँ जो Rotarians बैठे हैं, किस किस के केना केना पासे छोकराओं छे जी 28 वर्ष की मोटी उम्र ना छे? Can you raise your hands? All those who have children above 28 years of age. Children of brother and sister, भाई बहन जी 28 वर्ष की मोटा छे, can you raise your hand? 2. All those who have brothers, sisters or children more than 28 years of age. Okay, there are about 10-15 of you who have raised your hand. હવે હું એક ક્વેશ્ચન પૂછું છું, તમારા દીકરા દીકરી ने भाई बहन, आपके बच्चों और आपके ब्रदर सिस्टर जो 28 साल के ऊपर हैं, उनमें से कितने लोग रोटेरियंस हैं? रेज योर हैंड। पहले 15 हाथ उठे थे, अभी सिर्फ 3 हाथ उठ रहे हैं। 3 लोग खाली उठा रहे हैं कि मेरे बच्चे रोटेरियंस हैं। अगर आप अपने बच्चे और अपने भाई बहन को कन्विंस नहीं कर सकते हो रोटरी में आने के लिए, तो आप किसी और को क्या, किसी और के बच्चे को क्या कन्विंस करेंगे रोटरी आने के लिए? This change has to start at home. Why don't you open a next gen club? अपने शहर में 10-10 क्लब्स है, एक शहर में एक नेक्स्ट जेन क्लब खोल दीजिए जिसमें all are Rotarians, all the children of Rotarians. They are all children of Rotarians. Open a club of next gen club of Rajkot, next gen club of whatever area, wherever you are from. Saurashtra, next gen club of Saurashtra. Open it and have them all the Rotarians, all are Rotractors, all children of Rotarians. Convince them, friends. अगर relevant होना है, तो अगर हम देश की आगे बढ़ते हैं, हमारे देश में हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे बड़ा प्रधान है, ऑल दीज रोट्रैक्टर्स हमारे बड़ा प्रधान है, अगले साल के बड़ा प्रधान है, अगर वो ही नहीं रहेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगे क्या बढ़ेगी? So friends, that is why required, and why this is happening, and why Rotractors don't want to join, why we are not having younger people coming, because we don't share with them, and we need to adapt, friends. दुनिया बहुत ही फास्ट मूव कर रही है, इन बच्चों में बहुत ही एनर्जी है। They see, कभी कहीं गया था मैं, और एक लड़की ने मुझे कहा, मैंने कहा मैं रोटेरियन हूं, तो उस औरत ने मुझे कहा, अरे वाह कमल, आप तो रोमियो हो। मैं बड़ा खुश हुआ। अरे एक औरत मुझे कह रही है कि मैं रोमियो हूं। रोमियो तो वो होता है ना जो बड़ा हैंडसम होता है, डैशिंग होता है, फोर्थ कमिंग होता है, लड़कियों के इमेजिनेशन में आता है। तो मैं बड़ा खुश हुआ, खुश होकर देखने लगा, तो लड़की बोलती बड़े खुश मत हो। I said, why आप मेरे को रोमियो बुला रहे हो? Why should I not be happy? She said, you know what is the definition of Romeo? I said, no. He said, okay, the Romeo according to us is retired old men eating out. वो रोमियो होता है। उसके नजर में
Rotary Club members are Romeos, retired old men eating out. Do you still want to be called that? Do you still want to be identified like that? No. मेरे क्लब में जब उस लड़की ने मुझे ये कहा था 2005-6 में कहा था, जब मैं गवर्नर था, जब मैं फिनिश माय गवर्नरशिप, आई सेड आई डोंट वांट एवर टू बी कॉल्ड अ रोमियो. मेरे क्लब की एवरेज एज वाज 60 व्हेन आई वाज इन 2005-6 गवर्नर. टुडे द एवरेज एज ऑफ माय क्लब इज 33. I made sure that I am not a Romeo anymore. I made sure that new members have to join in my club. My club has to become vibrant. My club has to have energy. हम अपने घरों में अगर बच्चे नहीं रहेंगे तो कैसा होगा आपका घर? Can you ever think कि आपके घर में अगर बच्चे नहीं हो, आपके बेटे बेटियां नहीं रहती हो, तो कैसा होता आपका घर? How does your घर sound? अच्छा लगता है क्या आप लोग को, रोटेरियंस को? If you have a house without children, do you feel nice, or do you feel nice when you get into your house and your son and daughter, your daughter-in-law, your daughter and your son-in-law, or probably your children who are 20 years old are there in the house, or 25-year-old के बच्चे college-going children are there in the house? मजा आता है ना जब आप घर में जाते हो. और वही घर हो जहां हम जाते हैं और बच्चे नहीं हो तो काटने को दौड़ता है घर हमें. This is the same story with Rotary. अगर रोटरी को एंजॉय करना हो तो जैसे आप घर को सजाते हो बच्चों के साथ, रोटरी को भी सजाइए रोट्रैक्टर्स और अदर चिल्ड्रन के साथ, यंगर मेंबर्स के साथ. दैट इज द इक्वेशन व्हिच यू नीड. खुशनुमा घर बनाइए, खुशनुमा ऑर्गेनाइजेशन बनाइए. एंड फ्रेंड्स, बिफोर आई एंड, आई थिंक आई विल एंड प्रशांत, एंड वील हैव probably 10 minutes for question answers. I want to end by just small saying which I want to talk to every one of you. हर बार लोग कहते हैं कि सर कितना करते हैं, थक जाते हैं. तो I said, उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती. This is for you Rotractors. For Rotarians, उम्र थका नहीं सकती, Rotractors ठोकरे गिरा नहीं सकती. उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती. अगर जिद है जीतने की, अगर जिद है जीतने की, तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती. परिस्थितियों को बदलना सीखो, परिस्थितियों को अपना दास बनाइए, आप परिस्थितियों का दास मत बनिए. God bless you all. Have a great day. Enjoy the fellowship of your family members and your loved ones in home. Look after the needy, be compassionate, lend a hand to the people in need, and in young Rotractors को अपने घर में जगह दीजिए ताकि आपका घर खुशनुमा हो, आपका घर सुगंधित हो, आपका घर एनर्जेटिक हो, आपके घर में नए रंग आए. And Rotractors, it is your job to make the house more lively. अगर पिताजी हैं, आप घर में वापस जाते हैं, हम elders expect करते हैं कि you bring the energy into our house, you bring the new use, you bring the new thought process, you make us more lively. हमारी जिंदगियां आपकी एनर्जी से चलती हैं. So please, and you are the next leaders of the world and our organization, give in your bit. Go and give in your bit. This is the opportunity you have to make a difference in the world. So live it. Thank you. Thank you very much, Kamal ji. It's a fantastic session. Friends, आपके जो भी क्वेश्चन है आप हैंड रेज करिए और क्वेश्चन पूछिए one by one, please. Yeah, Srikant Indani. सर गुड मॉर्निंग. Good morning, Shrikant. कैसे हैं आप? एकदम ठीक हूँ. आप लोग को देखता हूँ तो और अच्छा हो जाता हूँ. सर अभी जो चेंजेस रोट्रैक्ट में आने वाले हैं, आई एम गोइंग टू फेस दैट चेंज बिकॉज 2022 से वो सारे चेंजेस लागू होने वाले हैं. नाउ ऑल टुगेदर वी आर टॉकिंग रोट्रैक्टर्स रोटरी में आना चाहिए. अब रोटरी ने 2022 से लागू नहीं होने वाले, 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं. Board decisions are already in action and they will be in action by 1st of July. 1st of July. अब हम रोट्रैक्टर्स को रोटरी में लाने की बात करते हैं और रोट्रैक्टर्स का अपर एज लिमिट हमने निकाल दिया है.
तो अब रोट्रैक्टर्स को एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म प्रोग्राम से निकाल के रोटरी इंटरनेशनल का मेंबर हमने बना दिया है। सो व्हाट आई फील, जैसे हम जैसे रोट्रैक्टर्स एक एज लिमिट खत्म होने के बाद हम लोग रोटरी में आए, अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि रोट्रैक्टर्स रोटरी में आने का प्रमाण कम नहीं होगा। नहीं होगा, बताता हूँ। आप स्कूल गए थे क्या? क्या जिंदगी भर स्कूल में रहना चाहोगे कि कॉलेज में जाना चाहोगे? और जब कॉलेज में कुछ लोग बड़े, सुनो, जब स्कूल में थे तो जिंदगी भर स्कूल में रहना चाहोगे, और जब कॉलेज गए तो जिंदगी भर क्या कॉलेज में रहना चाहोगे कि आईटी कंपनी ज्वाइन करना चाहोगे, कि अब बच्चे ही रहना चाहोगे? Friends, why we did this is because we believe each Rotractor is a powerhouse. Let him decide what he wants to be. He can be a Rotractor and a Rotarian. ठीक है, आपको रहना है Rotractor में, जिंदगी भर रहिए. You feel energetic staying with young people, do that. But you have another option. You choose, and it is not that age limit has been taken off because you can decide. It is also written, however, you can decide, the district can decide what can the age limit be in that district. The club can also decide. एक रोटरा क्लब अपने रेजोल्यूशन में, अपने बाई लॉज में ये डिसाइड कर सकता है कि हमारे क्लब की अपर लिमिट 35 होगी। ये हमने आपके ऊपर छोड़ दिया बिकॉज हम आपकी सोच को कदर करते हैं। जी, we give credence to the thought process of this younger generation, and let me tell you, none of these Rotractors would like to continue to be Rotractors. क्या बच्चे जिंदगी भर रहना चाहोगे? You want to become professionals, you want to become relevant, you want to do something greater and bigger in this world, or you just want to only drink thumbs up and coke, that's all your life. बियर नहीं पीनी है क्या? तो बियर पीने के लिए रोटरी में आना पड़ता है। रोट्रैक में से थम्स अप मिलती है और कोक मिलता है, ठीक है? Don't quote me on this, okay? ना। And Rotractors खास करके आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, ये कोट मत कीजिएगा। डायरेक्टर बोल रहा है बियर पीने के लिए रोटरी में आओ, ठीक है? Dear Chintan. Yes, Chintan. Yes, good afternoon, Kamal sir. Jai Jinendra. जय जिनेंद्र चिंतन, केम छे तू? मजामा? एकदम फाइन सर, एकदम फाइन। सर वी आर टॉकिंग अबाउट के एक प्रॉब्लम हम सब फेस करते हैं कि रोट्रैक्ट में होके फिर रोटरी में नहीं जाते हैं। वी डोंट गेट दैट कन्वर्जन रेशियो। नाउ व्हाट आई फील, व्हाट रोट्रैक्टर्स एट द एज ग्रुप ऑफ 18 to 30 उनको क्या चाहिए और व्हाट दे आर फोकसिंग इज देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट और करियर अपॉर्चुनिटी। तो आई फील ये कन्वर्जन रेशियो तभी बढ़ सकता है व्हेन एक फैमिली जैसा फीलिंग आ जाए एंड रोटेरियंस इन्वॉल्व रोट्रैक्टर्स उनके करियर डेवलपमेंट में और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में अपॉर्चुनिटी देकर, तो एक फैमिली बॉन्डिंग और अच्छा बनेगा एंड देन वी कैन हैव अ गुड कन्वर्जन रेशियो टू। चिंतन, दिस इज अ टू वे प्रोसेस। यस सर। तेरे पिताजी क्या करते हैं? सर वी आर इनटू बिजनेस। कल बिजनेस में नहीं बैठने दोगे तो तुम मान लोगे? राम भगवान हो कि कृष्ण बनने चाहते हो? दशरथ ने राम को कहा जा वनवास में, और तू चल गया। कि कृष्ण को अगर बोला होता कि वनवास में जाओ तो कृष्ण बोलते पिताजी यंग मैं हूं, सोचना पड़ेगा। और तेरे बाबूजी अगर बोलेंगे तेरे मेरा धंधा तेरे को नहीं दूंगा, मेरा घर तेरे को नहीं दूंगा, तू चला लेगा क्या? यस और नो? यस, बराबर है। तुम क्या बोलोगे? बाबूजी को बोलोगे बाबूजी I can increase your business 4 times, take me in. Yes, yes. Then what will बाबूजी के मुंह में से लार गिरने लगेगी, बोला मेरा बेटा होनहार है। देखो दोनों चीज होती है। You have to make yourself available. जिद करना सीखो अपने गवर्नर के साथ। DRR हो ना, प्रशांत के घर में पहुंच जाओ, धरना बैठ दो वहां पे 3 DRRs को लेके। ये अनीश का DRR प्रशांत है। के पास चले जाओ, 5 क्लब प्रेसिडेंट को लेके चले जाओ। वो अनीश है ना, अनीश के घर चले जाओ और वहां बैठ जाओ कि हमें काम दो भाई, हम काम करने आए हैं। Both ways it has to work. Number 1. Number 2, DRR हो ना, how many clubs will you convert into Rotary club from your Rotary club? That is your job. That will give you the opportunity to do work. Yes. ठीक है? Yes, sir. So by the end of this year, you are the incoming DRR. He is the current DRR. Incoming DRR Swapnil Gaul. अभी का DRR है ना? Yes, sir. Yes, sir. 3 महीने बाकी है अभी। Yes. Okay. I want you to call me up on 1st of July and tell me, sir, 5 Rotary clubs have been converted into Rotary club. Then you will not complain to me. Yes, sir. Okay. All right. Okay. Yeah. Thank you, sir. Anish सुनेगा commitment. Anish is there.
Yeah, Anish is here. ગવર્નર સાહેબ પ્રણામ. કેમ છો? સર સત શ્રી અકાલ. સર કેમ છે? તબિયત પાણી મજામાં? બસ સરસ. દાઢી વધારી છે ને એટલે હવે સત શ્રી અકાલ કરે છે. Give my regards to Swati. યા શ્યોર. કિરીટભાઈ ગોંડલિયા. सर कमल सर वन मोर पॉइंट, अगर फैमिली में डीजी हमारे अनिश सर जितने सपोर्टिव रहते हैं तो हर बच्चा takes रोटरी में 1 आना hour. चाहता है. Coming and કિરીટભાઈ ગોંડલિયા, your question. Okay, last 5 minutes. कमल भाई गुड मॉर्निंग. किरीट Good गोंडलिया, morning. रोटरी क्लब सूरत डायमंड सिटी, प्रेसिडेंट इलेक्ट. Yeah, Kiritbhai, tell me. ગુજરાતી માં જ વાત કરીશ તમારી સાથે. એ પણ ગુજરાતીમાં વાત કરશું સાહેબ. હા બોલો બોલો. વિરલ ગોંડલિયા કરે તો ને કમલભાઈ. એ જ કહેવા જઈ રહ્યો છું પ્રશાંતભાઈ, એ જ કહેવા જઈ રહ્યો છું. ઓકે બોલો. મારા સન છે વિરલ ગોંડલિયા. Okay. પ્રશાંતભાઈ, કમલભાઈ, મારા સન છે વિરલ ગોંડલિયા. 2009-10 ની અંદર એને મારે આઈવાઈ માં મોકલવાનો હતો, પણ એજ લિમિટ ના હિસાબે ન્યૂ જનરેશન માં જવું પડ્યું અને મારી ચોઈસ હતી જર્મનીની શોર્ટ ટર્મ ની અંદર. પણ જર્મનીમાં પણ એનો ચાન્સ નહીં લાગ્યો, એટલે મેં કીધું એને ગમે એમ કરીને ક્યાંય પણ જાય એને મોકલવો છે. છેલ્લે શ્રીલંકા કોલંબો ગયો હતો અને ત્યારથી રોટરી નો ભગત થઈ ગયો. ત્યારથી Absolutely. રોટરી એનાથી મોટો છે રોનક, એ પણ રોટરીમાં જ છે. અમે મારી વાઇફ છે ઇનરવિલ પ્રેસિડેન્ટ છે લાસ્ટ યર હતી, એટલે અમે આખું ફેમિલી રોટરીમાં જ છીએ. એટલે સવારના બ્રેકફાસ્ટ ઉપર ઘમાસાન યુદ્ધ થતું હશે. वो ઇનરવિલ ની વાત કરતી હશે, આપ પોતાની વાત કરશો તો તમે પોતાની વાત કરતા હશો. Good, I like it. Very good, but you got a fantastic son and I see so much of energy in him. તમે એટલી એનર્જી એને આપી છે, and thank you very much for bringing him into Rotary. I thank you for that. થેન્ક યુ સર. Thank you. Last question. Please raise your hand if you have a question. Friend, any questions? Please raise your hand. Last question. Yeah, Nilesh. Please continue, Nilesh. Kamal sir, good afternoon, sir. Good afternoon, Nilesh. Nilesh Shah, Rotary Vapi Riverside, currently DRCC. Okay. સર તમારી આપણી જો આ કોમ્યુનિકેશન થયું એમાં તમે એક વસ્તુ કીધી કે ડિસ્ટ્રિક્ટ અને ક્લબ, એટલે હું થોડુંક મારા નોલેજ વધારવા માટેનો ક્વેશ્ચન પૂછું છું તમને કે ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ ક્લબ બોથ કેન ડિસાઇડ ધ એજ, અપર એજ લિમિટ. સો હાઉ ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર ઓર ધ કમિટી? No, it is the Rotractors who will decide. ઓકે, So if you have a DRR, the DRR can call all his Rotract presidents and together they can take a call. The governor does not decide this. Okay, of course, governor can ask them, governor can guide them, but the governor, and it's a cumulative thing. Ask all the DRR and the club president and the governor and the district Rotract Rotract chairman, Yeah. Rotarian who's a Rotract chairman, all of you can sit together and come up with a policy of your own alone. And it's more of them. We have left it for the Rotractors to decide what they think is correct for themselves. Okay. But the governor and the Rotract president, a Rotract representative, Rotarian who's a Rotract chairman, play an important role in making them understand what is good for them. Okay. All right. આપણે ફોર્મ કરી શકીએ તો એ કઈ રીતે થશે? Yeah. Come again. ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એટલે સમજો કે અત્યાર સુધી કેવું હતું કે રોટરી સ્પોન્સર કરતી હતી, Yeah. હવે રોટરેક પણ સ્પોન્સર કરી શકે છે અને વિધાઉટ સ્પોન્સરશિપ પણ નવી રોટરી ક્લબ સ્ટાર્ટ થઈ શકે છે. Yes, you can do it. વિધાઉટ સ્પોન્સરશિપ કેવી રીતે થઈ શકે? Without sponsorship, if 20 people got together and write to the DRR, they'll form a club of their own. They don't need Okay, Rotary and they- sponsorships anymore. Okay. They don't need Rotary sponsorships anymore. Okay, and they are They have to eligible report for to the DRR. They have to Yes, send the yes, form through yes. the DRR. DRR. Okay. Yes, yes. Previously, they used to send it through Rotary Club. Now they have to send it through the DRR. Okay, fine. And they have to obey the district bylaws. Oh yes. Yeah. It's a DRR's job to make them understand what is expected of them, what are the rules, what are the regulations. Similar, Tamaro club now president, the liability has been transferred to the DRR. Okay. As simple Yes. as that. Thank you very much, sir. Thank you, Kamalji. Thank you very much for giving a good guidance and a good energy and new thoughts to District 3060 to bring youth to connect with Rotary. कमल जी, कल रुचि ने आपके इंट्रोडक्शन में बोला था, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मेरे दोनों आरआई डायरेक्टर मेरे जमाई है, एक भावनगर का, एक बड़ौदा का, दोनों गुजराती है. સાંભળ, જમાઈ તો બોલી દીધો છે, એનું ખામિયામું ભરવું પડશે. એમાં
નો બોલીએ કોઈ વિકલ્પ નથી ખાલી હાથે કોઈ વાર પાછો ન જાય. સાહેબ નો બોલીએ જમાઈ કોઈ વાર ખાલી હાથે પાછો ન જાય. So Prashant, so એનું ખામિયામું ભરવું પડશે ને. So the can you hear me? Yeah. So, ખામિયામું ઈ છે कि in your year 300 Rotractors become Rotarians, not at the shift. They can still be Rotractors, but I want 300 Rotractors to become Rotarians and at least 10 Rotract clubs converting into Rotary clubs. આ ખામિયામું છે. જમાઈને ઘર જમવા બોલાવો ને તો આ ભરવું પડે સાહેબ. ટ્રક ભરીને સામાન દેવો પડે જમાઈને. Of course, we take that challenge. I agree with you with all Rotracts, all PDRR and DRR relay and nominee. I assure you with all consent. Thank you. Thank you very much. Thank you. Yeah. Okay, before I go, let us all commend Anish. Let's give a big hand to Anish for the fantastic governorship, fantastic leadership he provide करे थे हमारी district में. Unbelievable, amazing. So Anish तने नमन. Yes. Sir, it's all because of your support. Your and Bharat bhai support. Kamal bhai, I would like to draw your attention. You have given a wonderful motivation to every one of us, the Rotractors as well as the sir. The recent governors in our district, out of governors, Oh yes, I forgot to mention that. Yes. 13% of our Rotary membership is below 40. Fantastic, very nice. And yes, most of the governors are from Rotract. Yeah, we have several clubs that are being for the children of Rotarians. Examples are Gontaicha Sunrise, Dule Crossroad, Vapi Riverside, and several. So here we are very vibrant with Rotract. Okay, all right. Take care, guys. I have to leave. Thank you. Enjoy your family. Care karjo. Have a good time with your family. This is a good opportunity to spend time with your